Hello friends, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today is 7th October 2023 and we are going to discuss important news articles of Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. आज का हमारा पहला न्यूज है फ्रीडम हाउस से रिलेटेड। अकॉर्डिंग टू ए न्यू रिपोर्ट बाय फ्रीडम हाउस, ग्लोबल इंटरनेट फ्रीडम हैज डिक्लाइन फ्रॉम द 30th कॉन्सिक्यूटिव ईयर। मतलब कि ग्लोबल इंटरनेट जो फ्रीडम है वो लगातार 13वें साल भी डिक्लाइन किया है। और की फाइंडिंग्स का ये कह रहा है कि ईरान विटनेस शार्प इंक्रीज इन डिजिटल रिप्रेशंस, चाइना रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स चाइना, ऐसे जाहिर सी बात है वर्ल्ड्स वर्स्ट इन्वायरमेंट फॉर इंटरनेट फ्रीडम फॉर द 9th consecutive year, followed by Myanmar. And a record of 55 countries this year imposed legal consequence for online repressions, whereas elections were identified as a trigger for digital repressions. तो इलेक्शन के चलते भी कहीं ना कहीं डिजिटल रिप्रेशंस हुआ है। दूसरा, इंडिया के रिगार्डिंग रिपोर्ट क्या है? द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स रिक्वायर लार्ज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू यूज एआई बेस्ड मॉडरेशन टूल्स फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेंट। मतलब जितने भी सोशल मीडिया वगैरह या है, जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, वहां पर एआई मॉडरेशन टूल्स लगाए गए हैं, जहां पर जिस तरह का कोई एग्रेसिव है तो उसको कम किया जा रहा है, उसको मॉडरेट किया जा रहा है। And the report expressed concern about the impact of India's expanding censorship regime on democracy. मतलब इंडिया में बहुत सारे सेंसरशिप हो रहे हैं और दिस रिपोर्ट हैज एक्सप्रेस कंसर्न्स। हालांकि जितने भी ये जो वेस्टर्न रिपोर्ट्स होते हैं ना, लगभग इंडिया को कहीं ना कहीं बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है इतने जितने भी रिपोर्ट्स में। India was evaluated on various censorship methods, including internet connectivity restrictions, blocks on social media platforms, website blocking, and the forced removal of कंटेंट। ठीक है, बहुत बार फोर्स रिमूव किया गया है कंटेंट को हटाने के लिए। इंडिया स्कोर्ड 50 on a scale of 1 to 100 with higher scores representing greater digital freedom, while Iceland received the highest score of 94, indicating the best climate for internet freedom. तो आइसलैंड को 94 मिला। सो दिस इज रिगार्डिंग द फ्रीडम हाउस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपना न्यूज है वो नेशनल टर्मरिक बोर्ड से रिलेटेड है। And recently the government of India notified the constitution of the National Turmeric Board. और ये बोर्ड क्या होगा? This will focus on the development and growth of the turmeric and turmeric products in the country, and it will especially focus on capacity building and skill development of turmeric growers for harnessing greater benefits out of the value additions. And the board will also promote quality and food safety standard and adherence to such standards. तो बोर्ड बेसिकली ये क्वालिटी और फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को मेजर करेगा और उसको कहीं ना कहीं मेंटेन करेगा रिगार्डिंग द हेल्थ ऑफ द टर्मरिक्स। नेक्स्ट, कंपोजिशंस क्या है, इस बोर्ड में कौन कौन होंगे? द बोर्ड शैल हैव ए चेयरमैन हु विल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। It will have members from the Ministry of Ayush, Department of Pharmaceuticals, Agriculture and Farmer Welfare, Commerce and Industries of the Union Government, senior state government representative from 3 states on rotation basis, and selected national states institutions involved in research representatives of turmeric farmers and exporters. It will have a secretary to be appointed by the Department of the Commerce. The Ministry of Commerce will be the nodal department. तो ये कुछ provisions है compositions के। नेक्स्ट की फैक्ट्स क्या है टर्मरिक के बारे में? इट इज ए पेरेनियल हर्बेशियस प्लांट बिलोंगिंग टू द जिंजर फैमिली। एंड क्लाइमेटिक कंडीशन जो होता है इसका, सॉइल एंड क्लाइमेट ए फ्राइबल वेल ड्रेन्ड रेड लोमी सॉइल विथ इन वेट और गार्डन लैंड अंडर ट्रॉपिकल कंडीशन इज आइडियल। रेन इट कैन बी ग्रोन इन रीजन रिसीविंग एन एनुअल रेनफॉल ऑफ 1500 मिलीमीटर। टेम्परेचर होगा रेंज 20 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड। ठीक है, and the largest producing state of turmeric are Maharashtra, Telangana, Karnataka and Tamil Nadu. तो ये कुछ provisions हैं key facts regarding the turmeric और curcuma longa. So that is regarding the आपका turmeric board. So that's all for today in our daily news analysis. आज के लिए इतना ही. And if you want the PDF lecture of this video, download it from our Telegram channel, and you can also follow our social media page like Facebook, Instagram, and YouTube for such other video contents. Thanks for watching and please do subscribe to our YouTube channel and our Facebook page. Take care.